हेलो डियर फ्रेंड्स पुणी थे स्वागत करुँच आप प्रिय यूट्यूब चैनल नंदा नर्सिंग लाइव को। तो डियर फ्रेंड्स आज जो OSSC नर्सिंग अफिसर एग्जाम एनसर की आपसी जो एनसर की मुझे सीटा हूँ डियर फ्रेंड्स देखिपे आपने क्वेश्चन बुकलेट सीरीज सेट सी रो क्वेश्चन आंसर आम डिस्कसन करवा। आजिकार ये जो OSSC नर्सिंग अफिसर एग्जाम थिला आपको करेक्ट आंसर करवार थिला, अदरवाइज आपनकर नेगेटिव मार्किंग देखिपे आपने देयर सेल बी नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स फॉर ईच रंग मल्टीपल आंसर। तो जदि आप रंग आंसर करेंगे ताहले आपनकर गोटे भूल हेले आपनकर 0.25 मार्क डिडक्ट हो। तो आपको केयरफुली पढ़वार थिला। देखंतु इंस्ट्रक्शन देइथिला फर्स्ट पेज रे। तो सेट सी रो जो इंस्ट्रक्शन थिला ये थिला आपनकर पई। देन आपनकर जो क्वेश्चन आसी डियर फ्रेंड्स देखि पारुथिबे आपनकर पार्ट 1 रे एरिथमेटिक आइसतिला। देन डियर फ्रेंड्स पार्ट 2 रे एवं पार्ट 2 रे आइसतिला इंग्लिश। तो देखि पारुथिबे 10टा क्वेश्चन थिला मैथमेटिक्स रु एवं 5 मार्क्स रो क्वेश्चन थिला इंग्लिश रु। तो यही जो पार्ट 1 आउ पार्ट 2 टा आमे नेक्स्ट वीडियो डिस्कशन करवा। तो आज आम डिस्कसन करवा पार्ट 3 को। पार्ट 3 क्वेश्चन जो आमर सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन डिप्लोमा इन GNM BSc नर्सिंग रिलेटेड जो क्वेश्चन आसी 85 मार्क्स ताकू आम सॉल्व करवा 1 by 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन थिला डियर फ्रेंड्स, ए नर्स इज परफॉर्मिंग CPR ऑन एन एडल्ट पेशेंट व्हेन परफॉर्मिंग चेस्ट कंप्रेशन द नर्स अंडरस्टैंड द करेक्ट हैंड प्लेसमेंट इज लोकेटेड ओवर द। सो चार्टा ऑप्शन थिला, यार करेक्ट ऑप्शन हम डियर फ्रेंड्स लोअर हाफ ऑफ द स्टेरनम। सो सी नंबर को आप करेक्ट आंसर करवार थिला। देन क्वेश्चन नंबर 17 थिला, द क्लाइंट प्रेजेंट्स विथ सीवियर रेक्टल ब्लीडिंग 16 डायरियल स्टूल डे सीवियर एब्डोमिनल पेन टेनिसमस एंड डिहाइड्रेशन बिकॉज ऑफ दिस सिम्टम्स द नर्स शुड बी अलर्ट फॉर अदर्स प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ व्हाट डिजीज। तो चार्टा ऑप्शन अच्छी देखो क्रॉन्स डिजीज अल्सरेटिव कोलाइटिस डायवर्टिकोलाइटिस एंड डी अच्छी पेरिटोनाइटिस। तो कौन करेक्ट आंसर कर कमेंट बॉक्स रे आंसर करंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 अच्छी साइड इफेक्ट ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव आर ऑल एक्सेप्ट देची। तो साइड इफेक्ट ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। सो चारिटा ऑप्शन देची, चारिटा ऑप्शन रे कोटा माने ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स रो साइड इफेक्ट नुह। तो डियर फ्रेंड्स ये देखिए देखो ऑप्शन डी अच्छी इंक्रीज रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर, एक्चुअली डिक्रीज रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर हुए, डिक्रीज रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर हुए, डिक्रीज मीन्स रेड्यूस्ड ओवेरियन कैंसर एंड एंडोमेट्रियल कैंसर हुए। तो ता सहित ये जो कंट्रासेप्टिव पिल्स रे एंडोमेट्रियल कैंसर मध्य रेड्यूस हुए, बट ये इंक्रीज रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर अच्छी से ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर। देन ए फ्रेशली प्रिपेयर ORS सॉल्यूशन शुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर। सो 24 आवर पर आप यूज करें ऑफिसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ESR इज कंसिडर्ड टू बी द मेजर ऑफ फॉलोइंग ब्लड फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी। So ESR is considered to be measure of following blood physical chemical property। तो चार्टा ऑप्शन देथिला, तो यार करेक्ट ऑप्शन हम एक्चुअली ब्लड सस्पेंशियल प्रॉपर्टीज हम। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 22, मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV। तो चार्टा ऑप्शन देथिला, चार्टा ऑप्शन रु करेक्ट ऑप्शन हम ब्लड प्रोडक्ट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, the drug that increases both systolic and diastolic blood pressure for prolonged period is। ऑप्शन ए रही डोपामिन, ऑप्शन बी रही इफेड्रिन, देन ऑप्शन सी रही एपिनेफ्रिन, ऑप्शन डी रही डोबुटामिन। तो करेक्ट ऑप्शन हम एफेड्रिन हम करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 25, ए मेजर गोल फॉर द क्लाइंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 48 hours आफ्टर ए सर्व वन इज a severe one is to prevent hypovolemic shock. The best indicator of adequate fluid balance during this period is। so best indicator देची। so adequate fluid balance ठीक ठाक अच्छी बोली कि फर्स्ट 48 आवर आपण मानकू जो adequate fluid balance जानिबा पाई बेस्ट इंडिकेटर कौन बोली पचारि। तो ये ऑप्शन ए रही एलिवेटेड हेमाटोक्रिट लेवल्स, चेंज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस,
then urine output of 30 to 50 ml for hour, then option D रही estimate of fluid loss through the burn scar. तो आमको बेस्ट इंडिकेटर कौन आम यूरिन आउटपुट द्वारा जापर. तो 30 to 50 ml for hour जदि आसले एडुकेट फ्लूइड बैलेंस अच्छी बोली आम कन्फर्मेशन हो. तो मेजर गोल फॉर द क्लाइंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 48 hours. So option B is the correct answer. Then question number 26. When the patient is acquiring infection from another patient, it is known as option A रही cross infection, option B रही iatrogenic infection, option C रही opportunistic infection, option D रही nosocomial infection. So when patient is acquiring infection from another patient, that is cross infection. Option D, option A is the correct answer. Then question number 27. A drug of choice to treat leprosy. So यार correct option होगा dapsone. Option D is the correct answer. Then question number 28. Following vasectomy for family planning, a patient should be advised to use some other method of contraception till. So चार्टा option देइथिला यार correct option होगा 8 weeks. So option D is the correct answer. Question number 28 रो option D is the correct answer. Then question number 29. Paracetamol each n. Option A is the correct answer. Antipyretic. Paracetamol each n antipyretic. Then question number 30. During ABG analysis, blood is collected from. So artery रू collection करेंगे ना vein रू करेंगे ना capillary रू करेंगे ना it can be taken from any side. So कौन सी जगह रू भी अपना draw कर पारिबे कि बोली question पचारची. तो draw during ABG analysis आमे artery रू ही blood collection करता हो. तो option A is the correct answer. Then question number 31. A 1-year-old child presented to the OPD with the history of short stature, tiredness and constipation. Examination revealed a palpable goiter, a serum T4 decrease, TSH level increase. So T4 decrease अच्छी एवं TSH increase अच्छी. Which of the most probable diagnosis? So चार्टा ऑप्शन देखिए चार्टा ऑप्शन रो कोडा करेक्ट ऑप्शन आपण माने कमेंट बॉक्स रे कमेंट करके जणांतु. देन क्वेश्चन नंबर 32 देखिबा. ए क्लाइंट इज एडमिटेड टू द साइकेट्रिक यूनिट ऑफ ए लोकल हॉस्पिटल विथ क्रोनिक undifferentiated schizophrenia. During the next several days, the client is seen laughing, then yelling and talking to herself. This behavior is characteristic of. So option A रही delusion, option B रही looseness of association, option C रही illusion, option D रही hallucination. तो यार correct option कौन है dear friends? Correct option is looseness of association. So schizophrenia patient कौन करछे laughing करछे yelling करछे एवं talking to herself. So this behavior is characteristic of looseness of association. Option B is the correct answer. Then question number 33. Which is the commonest side effect of copper tea among the following? So चार्टा option देतला. तो चार्टा option रो correct option होगा dear friends bleeding. Option B is the correct option, correct answer. Then question number 34. Which among the following condition required repeated blood transfusion? So option A रही iron deficiency anemia, option B रही pernicious anemia, option C रही thalassemia, option D रही vitamin B12 deficiency anemia. So thalassemia रे कौन करा हुए repeated blood transfusion करा हुए. So option C regarding iron supplementation. So यार चार्टा ऑप्शन दीची चार्टा ऑप्शन रो करेक्ट ऑप्शन होगा take it along with lemon juice. So option B is the correct answer. Then question number 37. A baby is admitted into the hospital with a history of projectile vomiting. After each feeding, on examination, it is found that the pyloric sphincter is thickened and does not open readily because the baby's loss of gastric juice. His blood probably indicates. So यार correct answer कौन होगा? चार्टा ऑप्शन दीतला यार correct answer होगा alkalosis. Option C is the correct answer. Then question number 38. Best test to detect iron deficiency in community is. So आपण माने community duty जाउछंती एवं iron deficiency detect करिवार अछि. तो कोन करिवार अछि? ट्रांसपेरेंट चेक करि परिबे ना सेरम फेरिटिन चेक करिबे ना सेरम आयरन करिबे ना हीमोग्लोबिन करिबे. तो करेक्ट आंसर हबो हीमोग्लोबिन. आजिकल हीमोग्लोबिनोमीटर आउसी हीमोग्लोबिन आपण माने इंस्टेंटली चेक करिकि जानि परिबे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हेछि कि. बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट आयरन डेफिशिएंसी इन कम्युनिटी इज hemoglobin. So hemoglobin test kari paribe. Then question number 39. A client with chronic schizophrenia who takes neuroleptic medication is admitted to the psychiatric unit. Nursing assessment reveals rigidity, fever, hypertension,
hypertension, then diaphoresis. These findings suggest which life-threatening reaction? The client with chronic schizophrenia who takes neuroleptic medication and admitted to the psychiatric unit. Nursing assessment कौन आइछि? Rigidity, fever, hypertension, diaphoresis. These findings suggest which life-threatening reaction? So यार correct option हबो neuroleptic malignant syndrome हबो. Option C is the correct answer. Then question number 14. Nurse is performing CPR on adult patient. When performing chest compression, the nurse understands the correct hand placement is located over the. So double times दुई थर क्वेश्चन पचार सेकेंड टाइम दुई थर क्वेश्चन गोटे क्वेश्चन को दुई थर पचारि देछि OSSC एग्जाम. सो एटा डबल बोनस मार्क जो मैंने ठीक करथिबे तांका पय बोनस मार्क. सो एटा भावंतुनि कि ग्रेस मार्क मिलो, एटा बोनस मार्क फॉर यू जो मैंने भी करथिबे ठीक ठाक. तो यार करेक्ट आंसर हबो लोअर हाफ ऑफ स्टेरनम. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 41. व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कौन हुए? ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन टिल फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स. ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. बहुत इजी क्वेश्चन. देन क्वेश्चन नंबर 42. गालोस ट्रैक्शन इज यूज्ड फॉर. ऑप्शन देछि चारटा ऑप्शन देइतला. करेक्ट ऑप्शन हबो कोन डियर फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 42 रा करेक्ट ऑप्शन हबो फ्रैक्चर शाफ्ट ऑफ फ्यूमर. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 43. क्वेश्चन नंबर 43 रा देछि व्हाइल गिविंग एनजी ट्यूब फीडिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन. सो एनजी ट्यूब फीडिंग देला बेले कॉम्प्लिकेशन न हबो कौन आपण मैंने नर्सिंग एज ए नर्सिंग एक्शन कौन नवा दरकार. सो प्रोवाइड हाई फाउलर पोजिशन देखिए आप एनजी ट्यूब फीडिंग करेंगे किसी कॉम्प्लिकेशन फर्दर कॉम्प्लिकेशन हेनी. जी भी ऑप्शन दिखाई ऑप्शन से ऑप्शन हेनी. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 44. व्हेन टीचिंग ए पेशेंट हु हैज ए डायग्नोसिस ऑफ सिजोफ्रेनिया अबाउट सक्सेस इंडिपेंडेंट लिविंग इन द कम्युनिटी, ए नर्स शुड एनकरेज द पेशेंट टू. व्हेन टीचिंग ए पेशेंट जो आप माने हेल्थ एजुकेशन दौरान हु हैज ए डायग्नोसिस ऑफ सिजोफ्रेनिया अबाउट सक्सेस इंडिपेंडेंट लिविंग इन द कम्युनिटी, से जदि किसी कम्युनिटी एरिया रोचंती ताले कौन टीच करेंगे कि एस्टाब्लिश ए स्ट्रक्चर डेली रूटीन. ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. देन क्वेश्चन नंबर 45. इन एन इन्फेंट द इम्पोर्टेंट क्लिनिकल फाइंडिंग्स व्हिच मेक्स वन टू सस्पेक्ट इंक्रीज इंट्राक्रैनियल टेंशन. सो ऑप्शन डी रही फीवर, ऑप्शन बी रही सनकेन आई, ऑप्शन सी रही टैकिफेनिया, ऑप्शन डी रही बल्ज्ड इंटीरियर फॉन्टेनेल. सो क्वेश्चन नंबर 45 रा करेक्ट आंसर हम बल्ज्ड इंटीरियर फॉन्टेनेल. देन क्वेश्चन नंबर 46. क्लाइंट इज टू रिसीव 2000 ml ऑफ IV फ्लूइड in 12 hours. The drop factor is 10 GTT ml. At how many drops per minute should the flow rate be set? So तो डियर फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन नंबर 46 को सॉल्व करने डियर फ्रेंड्स आपण मानक पई गोटे फॉर्मूला अच्छे से फॉर्मूला को पुटअप करके कैलकुलेट करें एवं आंसर बाहर करें. तो फ्लो रेट पे गोटे फॉर्मूला अच्छी. फ्लो रेट इक्वल टू टोटल वॉल्यूम इन ml जी फ्लूइड देथिबो ताको ml रे कन्वर्ट कर देबे. मानेकर 2 लीटर्स देते 2 लीटर्स ये जमी 2000 ml कराई ml रे कन्वर्ट करेंगे. देन इंटू ड्रॉप फैक्टर ये जमी ड्रॉप फैक्टर देइछि टोटल वॉल्यूम इन ml इंटू ड्रॉप फैक्टर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इन मिनट. तो आपण मानकु कैलकुलेट करबार अछि. देखो टोटल वॉल्यूम इन ml तो 2000 ml अच्छी 2000 ml इंटू ड्रॉप फैक्टर के 10 अच्छी. देन डिवाइडेड बाय 12 आवर्स अच्छी. 12 आवर हिसाब से देछि तो आम मिनिट ताको कन्वर्ट करवा 12 इंटू 60 मिनिट. तो टोटल केते हे जिवो 20000 डिवाइडेड बाय 720 तो केते आसीबो 27.77 समथिंग आसीबो. तो एथिरे ऑप्शन जो चारटा ऑप्शन देछि चारटा ऑप्शन रे देखंतु 27 देइनी तो 28 अप्रोक्सीमेटली 28 होची. तो करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. सो यार आंसर हबो ऑप्शन डी 28 हबो 28 ड्रॉप्स पर मिनिट हबो करेक्ट आंसर.
क्वेश्चन अच्छे व्हेन टेकिंग एपिकल पल्स व्हेयर शुड द नर्स प्लेस द स्टेथोस्कोप जदि एपिकल पल्स देखिबार अछि स्टेथोस्कोप आपण माने कोडी प्लेस करिवे तो यार करेक्ट ऑप्शन कोन हो डियर फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन इज in the fifth intercostal space at the left mid clavicular line. So option B is the correct answer. Next question देखिए question number 49 iron is deficient in. So चार्टा ऑप्शन देछि देखंतु ऑप्शन ए रे सीरियल ऑप्शन बी रे मेज एंड कॉर्न ऑप्शन सी रे पल्सेस ऑप्शन डी रे मिल्क द करेक्ट आंसर कोन हबो मिल्क हबो. Then question number 50 the nurse must know that the must accurate oxygen delivery system available is. So देखंतु मास्क कोडा देछि वेंचुरी मास्क देछि नाजल कैनुला देछि पार्शियल नॉन ब्रीदर मास्क अछि देन सिंपल फेस मास्क अछि द करेक्ट आंसर हबो वेंचुरी मास्क. द नर्स मस्ट नो दैट द मोस्ट एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम इज अवेलेबल इज वेंचुरी मास्क. क्वेश्चन नंबर 51 ड्यूरिंग होम विजिट नर्स माला फाउंड no signs of dehydration in 7 weeks old child who had diarrhea for last 2 weeks. The child is having option A रचे persistent diarrhea, option B रचे acute diarrhea, option C रचे dysentery, option D रचे severe dysentery. The correct answer होगा persistent diarrhea. Question number 52 glucose is added in ORS2. Option A रचे improve state, option B रचे decrease bacterial colonization of GIT, option C रचे increase the stability, option D रचे increase the absorption of sodium. So correct answer होगा increase the absorption of sodium. Then question number 53 for IM injection the nurse should insert the needle into the muscle at an angle of देखो 15 डिग्री थिला 30 डिग्री देछि 40 डिग्री देछि देन 90 डिग्री तो करेक्ट आंसर हबो 90 डिग्री. So IM injection 90 डिग्री ही दिया हुए. Then question number 54 nurse is about to catheterize bladder of a pregnant lady. She should be aware that all the following facts about female urethra are true except. तो देखो चार्टा ऑप्शन देता चार्टा ऑप्शन रो करेक्ट ऑप्शन हम इट्स पोस्टीरियर टू वेजाइनल और इफ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 55 एन एबीजी एनालिसिस रिपोर्ट शोज पीएच 7.20 देन कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी 35 mmHg देन बाइकार्बन अच्छी 20 MEQ और मिल इक्विवेलेंट पर लीटर देछि. दीज फाइंडिंग्स आर सजेस्टिव ऑफ सो एबीजी एनालिसिस करवार अछि आपन को देछि pH 7.20 कार्बन डाइऑक्साइड अछि 35 देन बाइकार्बन अछि 20 तो फाइंडिंग्स रे कोन आसीबा मेटाबॉलिक एसिडोसिस आसीबा मेटाबॉलिक अल्कोलिसिस आसीबा और रेस्पिरेटरी अल्कोलिसिस और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आसीबा अछि तो कोन हबो एनालिसिस रे फाइंडिंग्स कोन हबो तो करेक्ट आंसर कोन हबो 55 रा मेटाबॉलिक एसिडोसिस हबो. देन क्वेश्चन नंबर 56 phenol ketonuria is detected by which urine test. So correct answer is Guthrie test. So option A is the correct answer. Next question देखिए question number 57. Question number 57 अच्छे client is scheduled for bronchoscopy. When teaching the client what to expect afterward, the nurse highest priority of information would be priority based question. तो कौन करवार अच्छी तो चार्टा ऑप्शन देता करेक्ट ऑप्शन नंबर डियर फ्रेंड्स फूड एंड लिक्विड्स विल बी विथहेल्ड फॉर एटलिस्ट 2 आवर एटलिस्ट विथहेल्ड करने को पड़ो ब्रोंकोस्कोपी जदि आपन करने को माने पेशेंट ब्रोंकोस्कोपी पठेबार अच्छी जदि ताले 2 आवर्स एटलिस्ट सी किसी खाइबार नथिबो किछि पी नथिबो ताहले आपण माने ब्रोंकोस्कोपी करे पारिबे ताले शेड्यूल करि पारिबे पठे पारिबे ब्रोंकोस्कोपी पई. देन क्वेश्चन नंबर 58 द एल्बो इज डैश टू द रिस्ट. सो द एल्बो इज proximal to the wrist. Option D is the correct answer. Question number 58 ra correct answer hochi option D. Then question number 60 client is experiencing anxiety attack the most appropriate nursing intervention should include. So question number 60 ra correct answer kon habo staying with the client and speaking in short sentence. So option C is the correct answer. Then question number 61 which of the action could aggravate the cause of flare-ups in a patient with pleuritis. So देखो तो चार्टा ऑप्शन देता चार्टा ऑप्शन रु जदि प्लूराइटिस होची कुंडिया है पेशेंट को ठीक which action could aggravate the cause of flare-ups in a patient with pleuritis. तो कुंडिया को कारण जो हेथी पारे तो करेक्ट ऑप्शन हवा डियर फ्रेंड देखो डेली बात विथ फ्रेगनेंट सोप जोगु मे बी डायरिया प्लूराइटिस हेथी पारे पेशेंट को. The next question देखिबा question number 62 all of the following nursing intervention are correct when using the jet track method of drug injection except. So jet track injection jet track method जदि injection दोचंती ताहले
कोटा छाड़ी कि बाकी तक इंटरवेंशन करेक्ट तो करेक्ट हम यार जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हम ऑप्शन डी रब द साइड विगरसली आफ्टर द इंजेक्शन प्रमोट एब्जॉर्प्शन तो विगरसली आपण जदि घसीबे जेट ट्रैक इंजेक्शन मेथड दे सारा पर ताहले सेटा करेक्ट नुह से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 64 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेरिलाइज्ड बाय एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन सो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन रे कोटा को स्टेरिलाइज करिवे नाही सो सर्जिकल सीजर को not sterilized by antiseptic solution so correct option is C next question देखिबा 65 question number 65 main function of vitamin C in the body is correct answer is involvement as antioxidant so question number 65 C is the correct answer then question number 66 an infant is to receive thyroxine sodium 0.35 mg once a day orally the medication is available in elixir from 0.25 milligram per milliliter how much elixir should the nurse administer so यार करेक्ट आंसर कौन हम अपन मानू कैलकुलेट करके बाहर करबार थिला क्वेश्चन नंबर 66 द करेक्ट आंसर हो डियर फ्रेंड्स 1.4 ml so correct answer is 1.4 ml then question number 69 inadequate intake by the pregnant woman of which vitamin can cause neural ट्यूब डिफेक्ट तो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी द्वारा फॉलिक एसिड जब इंटेक न कला ताहले न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होवार चांस अच्छी क्वेश्चन नंबर 70 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर में अफेक्ट द ड्रग एब्जॉर्प्शन रेट फ्रॉम आईएम इंजेक्शन साइट सो चार्टा ऑप्शन थिला चार्टा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हबा ब्लड फ्लो टू द इंजेक्शन साइट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 72 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट बिटवीन human and cow's milk so which of the following is significantly different between human and cow's milk the correct answer कौन होगा question number 72 the correct answer is protein and lactose then question number 73 the most common type of ovarian cancer is epithelial ovarian cancer option C is the correct answer there question number 74 what should be the temperature of delivery room to maintain warmth for neonate the correct answer कौन होगा question number 74 correct answer is 25 to 28 degree centigrade temperature maintain करा हुए delivery room रे for maintain warmth for neonate then question number 75 Geeta returns from the post anesthesia care unit recovery room that is recovery room with a nasogastric tube in place following a gallbladder surgery हेतला दागो nasogastric tube दिया हेतला she continues to complain nausea so which action would the nurse take so कौन करिवार अछि continuously complain से nausea feel होछि ताको nausea लागुछि तो nurse रो action priority action कौन हबार अछि तो call the physician immediately administer the prescribed antiemetic check the patency of the nasogastric tube for any obstruction change the patient position so correct option हबा check the patency of the nasogastric tube for any obstruction जदि किछि obstruction अछि कोठी के बाहरी पड़छि कि कोड बाहरी आसी माउथ आडू को ताहले आपन को चेक करबार अछि पेटेंसी चेक करबार अछि nasogastric tube रो एनी obstruction अछि कि बोली कि सेटा फर्स्ट एक्शन ऑफ नर्सेस so option C is the correct answer then question number 77 MTB can be done up to so MTB done up to केते वीक्स भीतर आपन को MTP करबार अछि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी सो करेक्ट ऑप्शन कोन होबो क्वेश्चन नंबर 77 रो करेक्ट ऑप्शन होबो 20 वीक्स up to 20 weeks जाए आप मैंने MTP कराई पारिबे then question number 78 which hormone is responsible for the secretion of milk after pasteurization so यार correct option होगा prolactin option B is the correct answer then question number 79 30 years old patient has an ulcer over lateral malleolus nurse caring for this patient understand the pain of the patient is due to तो देखो चार्टा ऑप्शन देथिला ऑप्शन ए रे एडिमा ऑप्शन बी रे एक्सुडेट ऑप्शन सी रे इन्फेक्शन ऑप्शन डी रे अछि इस्चेमिया तो यार करेक्ट ऑप्शन कोन हो आप हमने कमेंट बॉक्स में कमेंट करंतु देन क्वेश्चन नंबर 80 व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू अचीव प्रेगनेंसी देखो चार्टा ऑप्शन देथिला चार्टा ऑप्शन रो करेक्ट ऑप्शन हो डियर फ्रेंड्स 14 days after the beginning of period so option C is the correct answer. Question number 81 is a patient gives a history that she has missed a single dose of her combined oral contraceptive pills. Which of the following will you advise? जदि patient
सिंगल तार डोज भूली जाइए ओराल कंट्रासेप्टिव पिल्स सिंगल डोज ताहले नेक्स्ट एडवाइस कौन देवे आपण मैंने तो ताको नेक्स्ट एडवाइस देवे डियर फ्रेंड्स टेक 2 pills next day and continue with the course. Option B is the correct answer. So option B is the correct answer. Then question number 82, after receiving a report, which of the following patients should the nurse see first? So देखंतु चार्टा ऑप्शन देछि a patient is in sickle cell crisis with an inflated IV, and then option B is a patient with leukemia who has received 1/2 unit of PEG cells. Option A is patient scheduled for a bronchoscopy, इटा हेनी. देन ए पेशेंट कंप्लेनिंग ऑफ लिकी कोलोस्टोमी बैग. सो जदि पेशेंट कंप्लेन कर कोलोस्टोमी बैग लिकी होली कंप्लेन कर बट ए पेशेंट इन सिकल सेल क्राइसिस मैंने कौन आंसर हम आपने कमेंट करूँ कौन आंसर करोटा करेक्ट आंसर हम तो निजे निजे कमेंट करूँ कमेंट बॉक्स रे कौन आंसर कर. तो देखा नेक्स्ट क्वेश्चन 83 अच्छी एज सेफ्टी अलर्ट द नर्स इज एवर द फॉलोइंग मेडिकेशन इज नेवर गिवेन डायरेक्टली इंट्रावेनसली. जो जितकी मेडिकेशन दिखाई जहाँ थी ऑप्शन रे से कोटा डायरेक्टली आपण मैंने दे पारे. सो मे बी पेशेंट लाइफ रे हैम्पर हो पारे. So which medication that is don't give directly intravenously may be dangerous for patient. So question number 83 रा correct answer है potassium chloride. So potassium chloride KCl आपण माने direct IV देई पारिबे नाही. Next question देबा question number 84. Question number 84 थिला depression. So depression is a normal part of aging. Option A थिला. Option B रे is not a normal processing of aging. Option C रे थिला include symptoms such as loss of interest, sadness, weight loss and worthless feelings. Then option D रे B and C are the correct answer. So B and C are the correct answer. Option D is the correct answer. Then question number 85, which of the following signs will indicate that a young child is suffering from severe pneumonia? सो ऑप्शन चार्टा देता चार्टा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन करवार आपको डी चेस्ट इंड्रोइंग. नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 86, ह्यूमन मिल्क इज रिच इन ऑल एक्सेप्ट. सो ह्यूमन मिल्क इज रिच इन ऑल एक्सेप्ट चार्टा ऑप्शन देता करेक्ट ऑप्शन कौन हम ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. सो आयरन हम आयरन छाड़ी कि बाकी तक समस्त अच्छी विटामिन ए अच्छी विटामिन सी अच्छी विटामिन ए अच्छी ह्यूमन मिल्क रे रिच इन ह्यूमन मिल्क. सो आयरन को छाड़ी कि बाकी तक सब विटामिन अच्छी ह्यूमन मिल्क रे. देन क्वेश्चन नंबर 87, द न्यूट्रिएंट दैट प्रोवाइड्स द बॉडीज प्रिफर्ड एनर्जी सोर्स. ऑप्शन ए रहे फैट प्रोटीन, ऑप्शन बी रहे प्रोटीन, ऑप्शन सी रहे विटामिन, ऑप्शन डी रहे कार्बोहाइड्रेट. सो करेक्ट आंसर हम कौन डियर फ्रेंड्स 87 करेक्ट आंसर हम carbohydrate. Option D is the correct answer. Then question number 18, drugs is used in the treatment of. Option A is tuberculosis, option B is leprosy, option C is malaria, option D is malaria. Correct answer is tuberculosis. Which of the following condition is manifested by increased intraocular pressure? Option A is cataract, option B is conjunctivitis, option C is dichrosis, and option D is glaucoma. So correct answer is dear friends correct answer haba kona glaucoma haba correct answer. Then question number 90, inspection of the uterine cavity by endoscopy with access through the cervix is known as hysteroscopy. Option A is the correct answer. Then question number 91, identify the high risk infant among the following. को इनफेंट हाई रिस्क रे आसीबो देखो 2.5 kg जदि थिबो बार्थ वेट आसीबनी हाई रिस्क इनफेंट एंड आर्टिफिशियल फीडिंग सेतिकी जाय जीवनी इनफेंट आर्टिफिशियल फीडिंग हाई रिस्क को जीवनी. देन इनफेंट विथ अफगार स्कोर 8 को जीवनी. तो जदि बार्थ वेट 2 kg अच्छी तब मे बी डियर फ्रेंड हाई रिस्क को जाइपे पेशेंट इनफेंट हाई रिस्क को आसीपे आइडेंटिफाई हो पारे. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 92, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्स्ट्रा थोरासिक टीबी इज चिल्ड्रेन. सो एक्स्ट्रा थोरासिक टीबी इन चिल्ड्रेन मोस्ट कॉमन साइट सेटा है लिम्फ नोड. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 93, ए नर्स इज केयरिंग एन एनीमिक पेशेंट व्हाट फाइंडिंग शुड सजेस्ट हर दैट इट इज एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया. देखंतु जदि एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया अच्छी ताहले यार जदि आपण माने केयरिंग करछन्ते एनीमिक पेशेंट को व्हाट फाइंडिंग यू सजेस्ट हर दैट इट इज एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया कौन आपण फाइंडिंग्स पाइबे. तो क्वेश्चन नंबर 93 रा करेक्ट आंसर हबो डियर फ्रेंड्स
ब्राडिकार्डिया एट रेस्ट सो जो रेस्ट कर ब्राडिकार्डिया हम ताको 94 क्वेश्चन नंबर 94 अच्छे व्हिच इज द कॉमन न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ डाउन सिंड्रोम तो देखंतु चार्टा ऑप्शन देछि चार्टा ऑप्शन रो करेक्ट ऑप्शन हम डियर फ्रेंड्स ओबेसिटी हम कॉमन न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम तो डियर फ्रेंड्स मत लगे ओबेसिटी हबार चांस अच्छी तो आपण मैंने कौन आंसर कर कमेंट बॉक्स रे आंसर करंतु निज निजर सो क्वेश्चन नंबर 94 जेहेतु वेट गेन हबार चांस अच्छी तो डाउन सिंड्रोम रे वेट गेन हबार चांस अच्छी तो से ओबेसिटी तो हम करेक्ट आंसर मत लगुच तो आप मैंने कौन आंसर कर चैट बॉक्स रे निज निजर आंसर करंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देबा क्वेश्चन नंबर 90 So question number 95 is nurse has to apply erythromycin ointment to a newborn child. Which area of IC is supposed to place it? So here correct answer is dear friends lower conjunctiva. Question number 95 correct answer is lower conjunctiva. Option C is the correct answer. Then question number 96 which of the following is a specific investigation to detect seizures? So आप मैंने डिटेक्ट करें को इन्वेस्टिगेशन द्वारा सो EEG द्वारा आप मैंने डिटेक्ट करें सीजर specific investigation to detect seizure that is EEG electroencephalogram. Then question number 97 an adult has just been brought in by ambulance after a motor vehicle accident when assessing the client the nurse would expect which of the following manifestation could have resulted from sympathetic nervous system stimulation. So correct answer कौन हम चार्टा ऑप्शन थिला आपण माने कौन आंसर कर जंती करेक्ट आंसर सो यार करेक्ट आंसर अब डियर फ्रेंड्स a rapid pulse and increased respiratory rate. Option A is the correct answer. Then question number 98 the client has clear drainage from the nose and ear after head injury hela pore clear drainage out nose ru ear ru. How can the nurse determine if the drainage is CSF cerebrospinal fluid बोले आप मैंने केमती जानवे हाउ कैन द नर्स डिटरमाइन द ड्रेनेज इज CSF बोले कि आप मैंने केमती जानवे सो यार करेक्ट आंसर हम टेस्ट फॉर ग्लूकोज जो टेस्ट फॉर ग्लूकोज पठेबे से ड्रेन को ताले आप मैंने कन्फर्मेशन हो कि CSF आउची कान आड़ आउ नाक आड़ बोली जापर क्वेश्चन नंबर 99 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स डज ए नर्स यूज टू एसेस द कॉग्निटिव फंक्शन ऑफ ए क्लाइंट सो कॉग्निटिव फंक्शन जानापी कौ जिनस कराऊँगी मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन सो MMSC करा हुए तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. देन क्वेश्चन नंबर 100 तो डियर फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन को आम आसी ये पर्यटन जो वीडियो को लाइक करना तो लाइक कर दिंतु फटाफट शेयर कर दिंतु जमी समस्त पाखे यही आंसर की पहुँची पार. ड्रग व्हिच इज यूज टू क्रिएट एवर्सन इन अल्कोहल डिपेंडेंसी ऑप्शन ए रही एपोमॉर्फिन ऑप्शन बी रही प्रोफेनॉल ऑप्शन सी रही डायजेपम ऑप्शन डी रही डुसाल्फॉर्म सो करेक्ट आंसर हम डुसाल्फॉर्म. सो आजिकार आंसर की एति डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट पुणी आसवा इंग्लिश एवं मैथमेटिक्स नहीं कि आपण मानकु जदि कौन क्वेश्चन डाउट लगे कि भूल होती भावुंट यहाँ फाइनल आंसर कि नुह डियर फ्रेंड्स आपण मानक गोटे हेल्पफुल हम प्रोबाब्ली ऑलमोस्ट क्वेश्चन ठीक ठाक कराई करेक्ट आंसर कराई जदि को क्वेश्चन